हाय गाइस, स्वागत है आपका ऑन येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फीमेल क्रिकेट लाइव। आज के शो पर हम डिस्कस करेंगे कल का मैच जो हुआ था मुंबई और आरसीबी के बीच। एमआई की कप्तान नैथसिवा ब्रंट ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया। मुंबई ने एनएसबी और पूजा वस्त्रकर की बेहतरीन गेंदबाजी के चलते अ, उन्हें एक डिसेंट टोटल की ओर रिस्ट्रिक्ट किया। दोनों ने दो दो विकेट चटकाए थे। आरसीबी के लिए एलिस पेरी ने 44 रन्स की अच्छी खासी पारी खेली, जिसके चलते आरसीबी ने 131 रन्स बोर्ड पर रखे। ये टारगेट चेस करते हुए हेली मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया ने एक बेहतरीन शुरुआत दी मुंबई इंडियंस को, और फिर अमिलिया कर ने आकर वो 40 रन्स की पारी खेली, जिसके चलते मुंबई एंडिंग में काफी आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। अमिलिया कर को अपनी बेहतरीन पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। जूलिया, हमने कल के मैच में डिस्कस किया था कि इफ वी सी आरसीबी बैटिंग फर्स्ट वी कुड एक्सपेक्ट अनदर 140 150 ऑड मैच। तो आपका क्या कहना है कल के मैच के बारे में? काफ़ी एक तरफा मुकाबला हम कहेंगे क्योंकि काफ़ी उम्मीदें थी हमें क्योंकि दो बड़े टीमें डब्ल्यूपीएल 2024 के आमने-सामने आई पहली बार इस सीज़न के अंदर, तो काफ़ी उम्मीदें थी कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा बट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग मेरे ख्याल से फैंस के लिए क्योंकि एक तरफा मुकाबला हुआ। मुंबई इंडियंस ने वो मैच काफ़ी आसानी से जीता। आखिर में 29 गेंदें भी बाकी थी और 6 विकेट से वो मुकाबला जीते। 132 रन का ही टारगेट सेट कर पाई थी आरसीबी की टीम। तो आई थिंक मुंबई इंडियंस एज यूजुअल हम कहेंगे अच्छा परफॉर्मेंस उनका। 4 में से 3 मैचेस जीत चुके हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी उन्होंने बरकरार रखा है अपना। आरसीबी के खिलाफ 3 मैचेस जीते हैं और आरसीबी ने 0। तो यही दिखा रहा है कि कितना डोमिनेट करा है मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को। और अगर थोड़ा मैच को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो अगर शुरुआत से देखें तो आरसीबी ने पहले जब बल्लेबाजी करी तो पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट्स उन्होंने गवा दिए थे। और यूजुअली हम टी20 क्रिकेट में कहते हैं कि जो टीम पावर प्ले जीतती है यूजुअली दैट टीम गोज ऑन टू विन द मैच। तो आई थिंक पावर प्ले के अंदर ही आरसीबी ने जो 3 विकेट्स गवाए और मुंबई इंडियंस ने उस फेज में जो अच्छी गेंदबाजी करी, आई थिंक वहां पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिफाइन हो गया था मैच। बट उसके बाद ऑफकोर्स एलिस पेरी की वो जो 44 रनों की नाबाद पारी जो थी और 100% तंदुरुस्त भी नहीं थी, जैसे कप्तान स्मृति मानधना ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के वक्त भी कहा, तो भी एलिस पेरी एक क्वालिटी ऑलराउंडर, उन्होंने वो अच्छी पारी खेली। टॉप रन स्कोरर भी थी अपने टीम के लिए और जॉर्जिया वेरम के साथ जो पार्टनरशिप करी, आई थिंक उसके चलते आरसीबी वो 131 के एक मॉडेस्ट स्कोर तक पहुंच पाई। बट ऑल क्रेडिट टू मुंबई इंडियंस के बॉलर्स मैं यहाँ पे कहूंगी, और खासकर नैटसिवा ब्रंट की कप्तानी। हमने देखा यह दूसरी बार अभी इस सीजन में उन्होंने कप्तानी करी है मुंबई इंडियंस की। पिछले मैच में थोड़े से ऑफ कलर लगे विथ रिस्पेक्ट टू कैप्टनशिप एंड द बॉलिंग चॉइसेस, बट इस मैच के अंदर उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस करे पूरे मैच के अंदर, और ऑब्वियसली खुद उन्होंने ओपन भी करा बॉलिंग, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। शी वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट विद बोथ बैट एंड बॉल। तो आई थिंक वो भी रिफ्लेक्ट हुआ एमआई के सक्सेस के ऊपर। पर आई थिंक मुझे लग रहा है कि आरसीबी ने जो शॉर्ट सिलेक्शंस थे उनके, अगर हम वो करीब से मैच देखें तो आई थिंक काफी गलत शॉर्ट सिलेक्शंस करे। और दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने अच्छा होमवर्क करा था। हर एक प्लेयर के सामने आई थिंक उनका गेम प्लान रेडी था और एनएसबी ने आई थिंक हर एक प्लेयर के सामने एक मैचअप भी रेडी रखा था। तो आई थिंक वो अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाए। और ऑफकोर्स फील्डिंग, एमआई की अगर आप फील्डिंग देखें तो काफी हाई कैचेस भी उड़े थे, पर कैचिंग काफी अच्छी रही एमआई के फील्डर्स की भी। तो आई थिंक ऑल एंड ऑल अच्छा परफॉर्मेंस उनसे था। और ऑब्वियसली जब चेस करने का वक्त आया तो वी नो दैट एमआई हैज बीन अ फैंटास्टिक चेजिंग साइड, और वापस उन्होंने वही दिखा दिया। यास्तिका और हेली, आई वाज सरप्राइज टू सी ऑनेस्टली, यास्तिका's बैटिंग 200 के स्ट्राइक रेट से तकरीबन वो खेल रही थी। पहला छक्का भी उनके ही बल्ले से आया था, तो बहुत रिफ्रेशिंग लगा उनका ये अप्रोच। और तकरीबन 4 ओवर में 45 रन ये दोनों ने बना लिए थे और आई थिंक मैच वहां पे आई थिंक ऑलमोस्ट जीत लिया था मुंबई इंडियंस ने। और उसके बाद एनएसबी और अमिलिया कर ने जो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करा, वो देखकर भी काफी मजा आया। अमिलिया कर अगेन प्लेयर ऑफ द मैच, 40 नाबाद की पारी उनकी थी। और डब्ल्यूपीएल 2023 जिसका हमने जिक्र भी करा था कल के डिस्कशन में, उन्होंने वो दूसरे मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता था जब एमआई और आरसीबी का राउंड 2 हुआ था। तो और एक प्लेयर ऑफ द मैच, तो आई थिंक आरसीबी के खिलाफ उनको खेलना पसंद है। एंड आई थिंक डिस्पाइट हरमनप्रीत कौर एंड शबनम इस्माइल नॉट बीइंग इन द प्लेइंग 11, एमआई कैन स्टिल विन। तो ये बहुत बड़ा मैसेज बाकी ऑपोजिशन को भी जा रहा है और खुद आई थिंक एमआई कैंप भी काफी कॉन्फिडेंट फील करेगा। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि एमआई वाइल चेजिंग इज अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। तो बस यहाँ पे एक छोटा स्टैट देना चाहूंगा मैं कि आज तक डब्ल्यूपीएल के जितने भी मैचेस हुए हैं पिछले सीजन और ये सीजन में, एमआई भी कभी भी चेस करते हुए हारा नहीं है। सो दैट इज समथिंग दे कैन टेक प्राइड आउट ऑफ। बट
on the other hand, when they have batted first, they've played 6 games जिसमें से वो लोग 3 जीते हैं और 3 हारे हैं. So that is something I can work on as a team. और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि नैट सिवा ब्रांड ने बॉलिंग ओपन भी की. So as a captain, when you are a bowler, there are times you may tend to underbowl yourself. तो वो नहीं देखने मिला हमें एनएसबी से. अच्छी मतलब अच्छी खासी बॉलिंग की उन्होंने. शी टुक इनिशिएटिव ऑन हरसेल्फ, ओनेस लिया उन्होंने. Pratik, what would you like to tell us about yesterday's match? Well, honestly, it was quite disappointing from RCB's point of view because they were coming into this game, especially the batters, with quite some good form. Because even though they lost the previous one to Delhi, but batters had gotten runs under their belt. From the beginning itself, in the fashion that Smriti Mandhana got out and then followed by Sophie Devine. I think things there itself started falling apart because the run scoring in the power play was quite less. And like Julie mentioned, even they had lost 3 wickets by them. Although Elise Perry later on came in and stuck at the other end, but she failed to find any partners because the batters on the other end were trying to manufacture new shots and go for the big ones very early on, where they had to rotate the strike and make sure to pull it up until the 10th or the 15th over. But finally she did find a partner in Georgia Wareham, where both of them stitched together some very valuable runs. And you have to give credit to Elise Perry, the way she came out of her illness and played to the merit of the ball. It wasn't a quick fire innings, but she made it sure to put the bad balls into the boundary and made sure to rotate the strike as well. So that would be the one positive that RCB would want to look back and take from this batting innings of theirs. And once again, excellent execution by the Mumbai Indians bowling unit, especially NSB and Pooja Vastrikar, both of who got 2 wickets apiece. Even though they went for boundaries, they came back with wickets, on a very constant basis. And the entire bowling unit together took wickets at regular intervals, which made sure that partnerships weren't built and also, derailed the RCB batting lineup. And coming into Mumbai Indians' second innings, where they batted, the way Yastika Bhatia got started off, it was a delight to watch because the ball was coming onto the bat so smoothly, and every other ball was disappearing into the boundary. So I think that was one side of Yastika Bhatia that all of us hadn't seen, and I'm hopeful that there's a lot in store for the coming tournament as well. And it was good to see Haley Matthews as well, to be among the runs. Even though Yastika took in charge of the innings from the beginning, Haley made sure to pitch in later on and get the crucial boundaries. And, the match was pretty much done there because I think in the first 2 overs itself, the required rate fell below 6. And in a T20 game, when your required rate falls below 6, it is difficult for the bowlers to bounce back. And it also felt like RCB's bowling unit did not have answers because whatever they had up their sleeves, they did try it, but the openers were just too much on them, and that did not work well in favor of RCB. They did not get the momentum. Usually, when you're defending such low totals, you need wickets at the upfront and to put pressure against the opponent. And I just feel it went horribly wrong for them, and that a lot of introspection is required after this game because they have lost 2 on the trot now, and you do not know as to which side it would go from here onwards. And looking at it from the qualification prospect, I think Smriti Mandhana has gotten a lot of work to do. Definitely, from an RCB standpoint, we saw them get off to a good start. एक अच्छा स्टार्ट रहा था उनका सीजन का. 2 में से 2 मैच जीते थे, फिर जाकर वो 2 लॉसेस का सामना करना पड़ा है उन्हें. सो दे नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर डेफिनेटली, बिकॉज हम जैसा डिस्कस कर रहे थे आफ्टर द फर्स्ट 2 मैच, दे वर कमिंग टुगेदर एज अ टीम. बट like we've seen over the last 2 games, there are individual performances again. There's not the entire team contributing towards the team total. Like we saw in yesterday's innings too, only Ellis Perry was the standout performer. There was no one playing around her.
So that's something RCB need to work on. Moving on to our match for today. आज का मैच जो होगा वो होगा दिल्ली और गुजरात के बीच में. दिल्ली अभी तक इस सीजन 3 मैच खेला है जिसमें से 2 जीत हासिल की है और फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर सेकंड है. दूसरी ओर गुजरात अभी तक अपने सारे मुकाबले हारा है और पॉइंट्स टेबल में फिलहाल लास्ट है. सो गुजरात जायंट्स पर्सपेक्टिव से आज का मैच एक मस्ट विन मैच हो जाता है. While Delhi would like to keep up with Mumbai Indians and register yet another victory, going into the Delhi leg of the tournament, they'll be playing back on their home turf, so they would like to carry that winning momentum into, familiar conditions, not familiar conditions per se, but where they are the fan favorites. So, Julie, आपका क्या ख्याल है आज के मुकाबले के बारे में? आज पर्सनली मुझे लग रहा है कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट शायद हमें देखने मिल सकता है. हालाँकि गुजरात जायंट्स 3 लॉसेस के बाद इस मैच के अंदर उतरेगी, पर तो भी जब भी एक टीम के पास ऐसे सिचुएशन आता है, व्हेन दे हैव नथिंग एल्स टू डू बट विन, तो एक अलग साइड हमें देखने मिलती है. यूजुअली क्रिकेट में हम देखते आए हैं कि व्हेन योर बैक इज़ अगेंस्ट द वॉल, एक अलग अलग आउटफिट उतरता है मैदान में और एक अच्छा प्रदर्शन देखने मिलता है. और आई थिंक पिछला मैच जो गुजरात जायंट्स का हुआ था, वहाँ पे आई थिंक वी सॉ ग्लिम्पसेस ऑफ देयर कमबैक. अगर वो मैच वो जीत जाते यूपी वॉरियर्स के खिलाफ तो शायद कुछ और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उतरती. बट इफ आई एम गुजरात जायंट्स, आई वुड बी वेरी हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस दैट आई हैड अगेंस्ट यूपी वॉरियर्स, क्योंकि वहां पे हमने देखे कि कुछ कुछ जो प्लेयर्स थे, लॉरा वुल्फाटो, फीबी लिचफील्ड, एशले गार्डनर, तनुजा कंवर ऑफ कोर्स, तो इन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए. और वो मैच अगर वो जीते तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस ज्यादा होता. तो एक अच्छा परफॉर्मेंस शायद हमें आज देखने मिले गुजरात जायंट्स से. बट ऑब्वियसली उनके सामने एक चैंपियन टीम है दिल्ली कैपिटल्स, लेड बाय मैगलैनिंग. तो ये दोबारा एक दो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बीच कंपटीशन होगा. ये दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, काफी समय के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके हैं. तो एक मैचअप विद इन मैचअप जैसे हम कहते हैं, वो भी एक देखने मिलेगा कि किसकी कैप्टनशिप आज ज्यादा बेहतर होती है. वो भी आज देखने में काफी दिलचस्पी होगी. बट आई थिंक अगर हम गुजरात जायंट्स के पर्सपेक्टिव से दोबारा मैं बात करूंगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स आई थिंक दे वॉक इनटू दिस मैच एज फेवरेट्स. बट जीजी अगर वो पिछला सीजन भी देखे WPL 2023, आई थिंक दे विल बी अ बिट कॉन्फिडेंट, क्योंकि 1 ईच ऐसा उनका विन लॉस रेशियो है. पहला मैच ऑब्वियसली दिल्ली ने वो जीता था, क्लिनिकल परफॉर्मेंस, 10 विकेट से वो मैच जीता था उन्होंने, काफी लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट भी था. पर दूसरा मैच गुजरात जायंट्स ने जीता था, एशले गार्डनर प्लेयर ऑफ द मैच थी. तो उनको भी वो परफॉर्मेंस उनका याद होगा. और आज वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जब खेलने उतरेंगी तो एक अलग गार्डनर हमें देखने मिलेगी, क्योंकि पिछले मैच में भी उनका जो बैटिंग रहा था वो काफी पॉजिटिव रहा था. तो आई थिंक एक अच्छी कॉन्टेस्ट की हम अपेक्षा जरूर रख सकते हैं आज के मैच के लिए. बिल्कुल. प्रतीक, आपका क्या कहना है आज के मैच के बारे में? व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड टू दिस कॉन्वर्सेशन? Well, so the fact that Gujarat Giants are reeling at the bottom of the table precisely is the reason for them to play fearless cricket, because they haven't got anything to lose. If we recall, RCB was in a similar situation in the men's circuit back in 2016, where they had to win 7 on 7 on the trot, and they were successful in doing so. So it's just in the mindset that you have to get going, and the fact that they have sorted out their batting lineup. If you see in the previous game, all of them went on to get good starts. Only thing was lacking was that no one was able to convert that into a good 50 or a 70. So if that happens today at the top of the order, that would definitely give leverage to the batters coming in, to play a free flowing game, and hence build on a higher total. Last time around, they managed about 140 on the board. Maybe another 20, 30 runs there, that would put pressure on the opponent, that mental pressure before they start off the inning, saying that we need to score 160 or 70 to win. So it's just about building upon those starts, and they were they are coming out of a good batting performance. So let's just hope and see that the batters look in similar groove and are raring to go today as well. And as far as the Delhi Capitals are concerned, I mean, it's all about the positive vibes that is there in the dressing room, because the way they nullified RCB's bowling lineup the last time around would give them a lot of confidence coming into this game. So it's going to be one cracker of a contest, and I'm hopeful that Gujarat today do emerge as the winners.
So let's take a look now at our fantasy picks for today. Julie, why don't you get us up and running? Yes. तो आज के मेरे फैंटेसी पिक्स, एक विकेट कीपर मैंने चूज़ करी है यहाँ पे, बेथ मूनी, जो गुजरात जायंट्स की कैप्टन भी है। उसके बाद 4 बल्लेबाज यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैगलैनिंग, लॉरा वुल्फार्ट, शेफाली वर्मा, फीबी लिचफील्ड। और शेफाली वर्मा मेरी वाइस कैप्टन होगी, अच्छे फॉर्म से गुजर रही है, 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज भी है उनके बल्ले से आए हैं। लॉरा वुल्फार्ट ऑफ कोर्स हमने देखा पिछले मैच में, जब पहली बार वो WPL 2024 में खेली तो एक 28 रनों की एक स्टडी पारी उनके बल्ले से देखी हमने। और आज मारिजान काप के खिलाफ आई थिंक उनका मैचअप देखने में काफी मजा आएगा। और मैगलैनिंग ऑफ कोर्स एक वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर्स वो है। और फीबी लिचफील्ड, जिन्होंने पिछले मैच में भी एक अच्छा स्कोर करा था। और उसके बाद 4 ऑलराउंडर्स हैं मेरे फैंटेसी पिक्स के अंदर, जेस जॉनसन, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट्स चटकाए थे, मारिजान काप, जो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है और वो कैप्टन होगी मेरे फैंटेसी 11 के अंदर। और एशले गार्डनर और एलिस कैप्सी, ये 2 ऑलराउंडर्स भी होंगे। और फाइनली तनुजा कंवर और अरुणधति रेड्डी, तनुजा कंवर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और अरुणधति रेड्डी एक राइट आर्म मीडियम पेसर। तो ये 2 बॉलर्स, आई थिंक दिस विल कंप्लीट माय फैंटेसी पिक्स। And Pratik, what about you? Yeah, Beth Mooney would be there for me as the wicket keeper. Although she hasn't been among the runs so far, I'm hopeful that she does pitch in, and it won't be long for her to get going with the bat as well. For me, the batters would include Meg Lanning, Shefali Verma, and Phoebe Litchfield. Meg Lanning hasn't performed, to her standards so far in this tournament. Although she has gotten runs, all of us know that she's capable of doing much more destructive stuff. Shafali Verma is coming out of a brilliant knock against the RCB. And even Phoebe Litchfield, the last time around, even though they ended up on the losing side, I think her innings was one of the most positive things to take back from that game. And then coming on to the all-rounders, I've gotten Jess Jonassen, Marizanne Kapp, Ashley Gardner, and Alice Capsey. These guys, play as a three-dimensional role in any team they are a part of. So they would form the crux of today's game. Marizanne Kapp would be my captain. She's very handy lower down the order. Even the previous time around, we saw that as she came, she got going with a couple of boundaries. And with the ball, I mean, we've just seen her doing her thing. Even though she wasn't successful against RCB with the new ball, the way she came back and broke the partnership in the later half of the innings speaks volumes about her ability as a bowler. And then Ashley Gardner looks like she's gotten back her batting form the last time around, where she played a quick fire 30. And Alice Capsey has been brilliant on top of the innings, and I think she's been the defining factor to Delhi's batting unit. And the bowlers would comprise of Shikha Pandey, Radha Yadav, and Tanuja Kanwer for me. So Shikha Pandey also, I don't think she's lived up to the best of her abilities. She's capable of much more than that. I'm hopeful we see that today. Radha Yadav has gotten wickets under her belt, and hopeful that she continues the same. And Tanuja Kanwar has been a common talking point for us both with the bat and ball. So let's see what we've got from her and today as well. अब देखते हैं आज के की प्लेयर्स। आवर फर्स्ट की प्लेयर फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स शेफाली वर्मा। और शेफाली वर्मा उम्दा बल्लेबाज है, इनिंग्स की शुरुआत करती है मैगलानी के साथ, एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट देती है दिल्ली को ऑन मोस्ट ओकेजन्स। अब तक इस सीजन में उन्होंने 115 रन बनाए हैं और 64 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। जूली, आज का क्या रोल होगा शेफाली वर्मा का फ्रॉम द दिल्ली पर्सपेक्टिव? आई थिंक शेफाली का रोल काफ़ी क्लियर होता है, किसी भी वो टीम के लिए खेले, दिल्ली कैपिटल्स हो या इंडियन टीम के लिए हो, उनको क्रीज पे जाना है, पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना है। वो जो पहले 6 ओवर है वहाँ पे लाइक शी इज बीन गिवन द मैसेज जस्ट टू डेमोलिश द ऑपोजिशन बॉलिंग अटैक। तो आई थिंक वही रोल होगा उनका दोबारा, क्योंकि इस सीजन की शुरुआत हमने देखी, पहले मैच में केवल 1 ही रन आया था उनके बल्ले से। और उसके बाद जो सेकंड और थर्ड मैच हमने देखा है 64 रन और उसके बाद 50 रन, तो बैक टू बैक 50s के बाद ये बल्लेबाज आज जीजी के सामने खेलने उतरेंगी। और जैसे कि मैं अपने डिस्कशंस में कहती आ रही हूँ कि जो मैचअप्स की बात करते हैं या एक प्लेयर जिसको एक ऑपोजिशन के खिलाफ खेलना पसंद है, तो मुझे लगता है शेफाली वर्मा को जीजी के खिलाफ खेलना पसंद है।
क्योंकि दोबारा WPL 2023 की यादें हम यहाँ पे ताज़ा करेंगे। पहला मैच जहाँ पे 105 या 106 चेस करने थे दिल्ली को, तभी शेफाली वर्मा 76 रनों की उन्होंने नाबाद पारी खेली थी। तो एक अच्छा प्रदर्शन उनके बल्ले से हमने देखा था, और हमें पता है कि जीजी का बॉलिंग लाइनअप इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कंपेयर टू अदर टीम्स। तो आई थिंक आज उनके पास बहुत बड़ा मौका है कि दोबारा एक अच्छी पारी खेले, और हैट्रिक ऑफ हाफ सेंचुरीज भी आज लगा सकती है। एंड उनका स्ट्राइक रेट भी अगर हम देखें, आई थिंक इट इज़ अ नो ब्रेनर कि उनका स्ट्राइक रेट हमेशा से ही अच्छा रहा है। 140 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करते आई है। और एक स्टैट जो मुझे उनका अच्छा लग रहा है इस सीजन अभी तक, उनके बल्ले से सबसे ज्यादा छक्के आए हैं। उनके बल्ले से 8 छक्के आए, विच इज द हाईएस्ट इन द टूर्नामेंट सो फार। स्टिल अर्ली डेज इन द टूर्नामेंट, बट दिस इज ऑलवेज अ गुड स्टैट टू हैव अंडर योर बेल्ट। और अगर हम चौके देखें तो 9 चौके आए हैं। तो आई थिंक शी इज रिलाइड मोर ऑन सिक्सेस। तो आज वैसे ही कुछ चौकों छक्कों की बारिश हम देख पाएंगे शेफाली वर्मा के बल्ले से। So, Pratik, what would you like to tell us about Shafali's impact on today's game? Well, as we've discussed time and again, Shafali for us at the top is the aggressor, and she comes out to bat with a very experienced Meg Lanning. And there have been days where Lanning finds time to get going, and that is where Shafali Verma plays a very crucial role, because it comes to her naturally to go on and assassinate bowlers by her will, and we've seen it time and again for her to make it look very easy. And even the last time around against the RCB, the way she got going was spectacular. Where Lanning took some time to get going. So that is one thing, and another thing, she needs to be wary of, because the last time we saw her get dismissed by Shriyanka Patil, that was to the shorter delivery, which was bowled a little bit quicker by her, and she was caught there at mid wicket. That dismissal, clearly indicates as to Shafali Verma is a very risky player, because even for the pull shots she executes, there's a lot of risk involved, and somewhere I feel that her power gets minimized because the usage of wrist is more than the arm. I mean, this is only from the perspective of us analysts, and she knows what she does the best. But on that very particular dismissal, it looked like she was committed early on to go on and play the big shot. So that shouldn't happen today. She needs to play a little bit more cautiously until she gets going. If you all remember, even the last time around, she was dropped by Shriyanka Patil very early on, and that drop catch was very costly for RCB. So in terms of this, she would have to assess conditions, and yeah, it's a green card for her from there on. So moving on to our next key player for today is Marizanne Kapp. न्यू बॉल बॉलर है, अब तक सीजन में 6 विकेट लिया है. वी सॉ हाउ शी मेक्स द न्यू बॉल टॉक. और हम जानते हैं कि T20 में मेडन डालना कितना मुश्किल होता है, और इन्होंने अब तक 3 मैच में 2 मेडन ओवर्स डाल दिया ऑलरेडी. और बल्लेबाजी भी काफी अच्छी कर लेती है. उन्होंने अभी तक 48 रन कंट्रीब्यूट किया है दिल्ली की ओर. तो जूली, आपका क्या कहना है मैरिजान कप के करंट फॉर्म के बारे में? लाजवाब। आई थिंक दिस इज द ओनली वर्ड आई कैन से फॉर मारिजान कप, क्योंकि पिछले 2 मैचेस जो दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं, दोनों मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता है मारिजान कप ने. तो एक जेन्युइन मैच विनर है दिल्ली कैपिटल्स के खेमे के अंदर. बल्ले से भी कमाल करती है, और गेंद से तो उनका आई थिंक देयर इज नो अदर प्लेयर आई थिंक प्रोबेबली इन दिल्ली कैपिटल्स लाइनअप हु कैन मैच अप टू हर. पावर प्ले के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स भी उन्होंने चटकाए पूरे. अगर हम WPL देखें 2023 और 24 अभी तक का सफर जो रहा है, तो न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग करती है. उनको पता है उनका गेम प्लान क्या होता है हर एक बल्लेबाज के सामने. तो काफी क्लियर होता है उनका माइंडसेट, और ऑब्वियसली इतना जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा है उनका, 12-15 सालों से वो खेलते आई है साउथ अफ्रीका के लिए, तो वो भी झलकाता है उनके फॉर्म के ऊपर. तो दोबारा आई थिंक मारिजान काप का रोल इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट एज अ बॉलर आई फील, क्योंकि जो न्यू बॉल से वो बॉलिंग करती है वो लाजवाब रही है, बेहतरीन रही है. और जो अर्ली ब्रेक थ्रूज जिसकी जरूरत हर एक टीम को रहती है, वो दिलाने में काफी सक्सेसफुल रही है मारिजान काप. और गुजरात जायंट्स के खिलाफ वापस मैं कहूंगी इनको खेलना पसंद है. पहला जो फाइफर हमने देखा था मारिजान काप से, वो गुजरात जायंट्स के खिलाफ ही आया था, वो पहले मैच में WPL 2023 में. तो वो एक अच्छा प्रदर्शन आया था उनका जीजी के खिलाफ. और आई थिंक अगर हम बल्ले से भी उनका रिकॉर्ड देखें, पिछला मैच जो RCB के खिलाफ था, वो 32 रनों की जो पारी खेली थी, नंबर 5 पे आके उन्होंने जो बल्लेबाजी करी थी, जेस डोनासन के साथ जो पार्टनरशिप करी थी,
और आई थिंक ये दोनों डिपार्टमेंट्स में अच्छा करना किसी भी ऑलराउंडर के लिए सही बात है और टीम के लिए भी अच्छी पॉजिटिव साइंस है। तो आई थिंक और एक अच्छा परफॉर्मेंस हम देख पाएंगे काप से। और जस्ट उनके बल्लेबाजी के बारे में यही कहना है कि काफी फाफ डू प्लेसी की याद दिलाई मुझे उनकी बल्लेबाजी, जिस तरीके से उन्होंने वो स्टांस लिया और जिस तरीके से वो बॉलर को देख रही थी। तो एक आक्रामक खिलाड़ी है। तो आई थिंक गुजरात जायंट्स विल बी वेरी कॉशियस अबाउट मारिजान काप। एंड आई थिंक वो उनका रोल वही होगा कि ज्यादा जो उनको विकेट्स ना दे, क्योंकि एक बार वो पहला विकेट अगर ले तो आई थिंक वो 3-4 विकेट भी चटका सकती है। So, Pratik, what would you like to tell us about Marizanne Kapp's role today? Well, just adding on to what Julie has mentioned, the prospects she brings onto the table is extremely valuable, and especially when you're coming, with two losses at the beginning of the tournament, she's the one you can really bank on because even if she's having a bad day with the ball, she could come in and compensate lower down the order with the bat. Starting off, with her performance against the RCB the previous time around, the way she got into the groove with the bat was very pleasing because it's not easy for batters lower down the order to come and look that comfortable and send a few balls across the boundary line. So you know players like her would give leverage to the batters at the top to go for the shots they want to play, because you know that even if you lose a couple of wickets early on, you got someone like Marizanne Kapp at the back to come and anchor the innings. And with the ball, we've seen time and again her abilities with the new ball to swing it both ways, and also that she brings so much experience into the contest. So that's a big positive, and I'm hopeful she plays the role that is assigned to her today. Let's move on to our next key player for the day. That is from Gujarat Giants. That is Tanuja Kanwer. अभी तक 5 विकेट ली है उन्होंने सीजन में, 2 for 21 उनका बेस्ट रहा है। और अगर पर्पल कैप की लिस्ट के बारे में बात किया जाए तो वो करंटली 4th है और गुजरात के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर रही है अब तक। और बैटिंग भी काफी डिसेंट कर लेती है। शी इज कम इन कंट्रीब्यूटेड रन्स टुवर्ड्स गुजरात। We've all spoken about the woes that Gujarat has had in the batting order this season. Julie, आपका क्या कहना है तनुजा कन्वर के बारे में? 5 विकेट्स ले चुके हैं और पर्पल कैप केवल 2 विकेट्स ही दूर है, हम इतना ही कहेंगे। और हमने देखा है कि अच्छा प्रदर्शन उन्होंने करा है। एंड इफ आई कैन से शी हैज बीन द ओनली सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड ऑफ गुजरात जायंट्स अभी तक। हालांकि पीबी लिचफील्ड और एशले गार्डनर ने भी अच्छे ग्लिम्सेस दिखाए पिछले मैच के अंदर, बट आई थिंक तनुजा कंवर बीइंग अ डोमेस्टिक प्लेयर, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है उन्होंने, तो एक अच्छा पॉजिटिव वो रही है जीजी के लिए। और यजाद प्रतीक, मैं जस्ट गुजरात जायंट्स ने जो विकेट्स चटकाए अभी तक ये 3 मैचेस में मैं वो देख रही थी, तो टोटल 11 विकेट्स ही ले पाई है गुजरात जायंट्स की टीम 3 मैचेस के अंदर, और उसमें से एक रनआउट है। तो अगर हम देखें तो बॉलरों ने केवल 10 विकेट्स लिए हैं और 10 में से 5 विकेट्स तनुजा ने लिए हैं। तो यही दिखा रहा है कि 50% विकेट्स अगर एक गेंदबाज ले रहा है तो कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी है गुजरात जायंट्स की एक अकेले गेंदबाज के ऊपर जो एक डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर है। तो आई थिंक उनका रोल आई थिंक दोबारा इंपॉर्टेंट होगा। एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हाउ बेथ मूनी यूजेस तनुजा कवर, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि उनका पावर प्ले के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो ज्यादा मिडल ओवर्स या डेथ ओवर फेज में ही गेंदबाजी करती है। तो आज बेथ मूनी के पास ऑप्शन है, क्योंकि उनके सामने आज 2 दाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे, मैग्लैनिंग और शेफाली वर्मा। तो अगर आज उनको पावर प्ले के अंदर एक हाथ ओवर दे दे, क्योंकि ये इनफॉर्म गेंदबाज है, तो अगर वहां पे अगर उनको विकेट मिली तो एक गुजरात जायंट्स को अच्छी स्टार्ट हो सकती है गेंदबाजी से। तो आई थिंक उनका रोल आज इम्पोर्टेंट होगा। और प्रतीक, what do you want to tell us? So she's that one spinner, who makes use of the flight that is on offer. We've discussed that she isn't, a very tall contender like, say someone like a Sophie Eccleston. So her strength is in flighting the ball up and, asking the batters to come and get the ball and then deposit into the stands, which batters do find difficult. Last time around, we saw the way she got Kiran Navgire tossed it up nicely and inviting her for the big shots. So I think her strength lies in doing that very thing. And like Julie mentioned, it is very essential for the captain to use her in an optimum way because she's gotten 50% of the wickets for her team. So just pitch it up and
do not be short, because she has bowled the shorter length on multiple occasions, and which is extremely easy for any batter to latch on to. So yeah, Tanuja Kanwer would play a huge impact in today's game, given that she's coming in with so many wickets. So I'm hopeful that she continues the same today as well. Definitely. Now let's look at today's game from a fan's perspective. So let's talk from the Gujarat Giants fans perspective first. तो अब तक के मैचेस में हमने हमेशा डिस्कस किया है कि गुजरात ने काफी स्ट्रगल किया है इन द मिडिल ऑर्डर और द मिडिल ओवर्स एज यूड लाइक टू कॉल इट. और बट पिछले मैच में हमने देखा कि फीबी लिचफील्ड ने 35 ऑफ 26 की पारी खेली और एशले गार्डनर ने वो 30 ऑफ 17 की पारी खेली, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जिसके चलते एक रिस्पेक्टेबल टोटल रखा गुजरात ने. इट वाज नॉट अ विनिंग टोटल बट इट हैज बीन अ बेटरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर अर्लियर गेम्स. सो जूली, आप फीबी और एशली के पार्टनरशिप के बारे में आज के मैच में क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये दोनों बल्लेबाज काफ़ी कॉन्फिडेंस लेंगे जो पिछला उनका इनिंग्स जो था यूपी वॉरियर्स के खिलाफ, क्योंकि फीबी लिचफील्ड तीनों मैचेस उन्होंने खेले. ऑब्वियसली एशले गार्डनर भी तीनों मैचेस प्लेइंग 11 का भाग रही थी, पर फीबी लिचफील्ड ने पहली बार डबल डिजिट स्कोर करे थे थर्ड मैच में. पहले दो मैचेस हमने देखे 5 और 7 रनों की पारी आई थी. काफ़ी प्राइस टैग का प्रेशर जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी थी, आई थिंक वो भी उनके ऊपर हो सकता है. यंग प्लेयर है, 19-20 साल की ये खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया से आती है. पिछले साल ही इंटरनेशनल डेब्यू भी करा है, बट आई थिंक जब भी उन्होंने डेब्यू करा है वो आई थिंक बहुत बढ़िया डेब्यू रहा था. फास्टेस्ट 50 भी उनके नाम है T20 क्रिकेट के अंदर वुमेन्स सर्किट में. तो इतने प्रेशर के बाद जब भी एक प्लेयर आता है तो ऑब्वियसली मुश्किल होता है, बट जो पिछला परफॉर्मेंस रहा था फीबी का, आई थिंक उसके बाद वो काफी कॉन्फिडेंस लेंगी और डीसी के खिलाफ आई थिंक एक अलग फीबी लिचफील्ड और एशले गार्डनर हमने देखे मिलेगी. और पिछला मैच जिसके बारे में हम चर्चा करते ही आ रहे हैं वो 142 का टोटल पॉसिबल नहीं होता अगर ये दोनों के बीच वो साझेदारी नहीं होती थी. मेरे ख्याल से 52 रनों की वो साझेदारी हुई थी और उसके चलते ही गुजरात जायंट्स 142 रन स्कोरबोर्ड पे डाल पाई थी. तो और एक बार ये इंपॉर्टेंट होगा. और किसी भी आई थिंक जो अपोजिशन है उनके सामने जब भी वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आता है वो मुश्किलें पैदा करता है. एंड थैंकफुली फीबी लिचफील्ड एक लेफ्टी है, एशले गार्डनर एक राइटी है, तो वो अगर कॉम्बिनेशन इन टैंडम वर्कआउट करेगा तो दिल्ली कैपिटल्स को डेफिनेटली काफी चेंजेस करने पड़ेंगे उनके बॉलिंग अप्रोच में भी, कॉन्स्टेंट चेंजेस इन द फील्ड प्लेसमेंट्स. तो ये दोनों का चलना इंपॉर्टेंट होगा. और आई थिंक अगर ये चले तो गुजरात जायंट्स के पास एक अच्छा मौका है पहली जीत रजिस्टर करने का. Pratik, what would you like to tell us about Phoebe and Gardner's role today? So I feel that both of these girls do form the fulcrum of their batting unit, because the last time around they were once again struggling, and only when these two came together at the middle, did the runs start coming very easily. Starting off with Phoebe Litchfield, she's that classical left-hander. That picture is generated in our mind, because the kind of shots she plays to the medium pacers, or even the cheeky shots she plays to the spinner, that comes to define her as a complete package. And on her day, it is quite difficult for bowlers to put a stop to it. And Ashley Gardner is someone who gets immense power into her batting. We've seen how strong her slog sweeps have been, and that plays to her strength as well. So both of these do complement each other's batting style, where someone like an Ashley can take the lead and go after the bowlers, while Phoebe Litchfield can look for the occasional boundaries and rotate the strike extremely well. So it is very important for these two to put a good partnership today, so that the Gujarat, their innings does not falter and goes on to breach whatever target there is. So let's move on to our next talking point for today. That is from the Delhi Capitals fan perspective. So we've all been discussing one name consistently, even though she's not featured in the playing 11 per se. That is Titas Sadhu. We saw her great performance in the bilateral series against Australia that was earlier this year. And Shikha Pandey has featured in the playing 11 ahead of her. So I'd just like to read you a stat of Shikha Pandey that this season she's bowled 11 overs, she's conceded 87 runs and picked up just the 2 wickets. So, do you think moving forward, Tita Sadhu could potentially replace Shikha Pandey? Julie, what are your views on this?
एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे भी शुरुआत में लगा था ये सीजन स्टार्ट होने के पहले कि तितास साधु होंगी प्लेइंग 11 के अंदर दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्योर रीजन कि उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू भी करा सीनियर इंडियन वुमेन्स टीम के लिए पिछले साल ही। और एक अच्छा साल रहा था उनका, अगर हम शुरुआत से देखें जनवरी में जब वो इंडिया अंडर 19 का पार्ट थी, साउथ अफ्रीका में जाके T20 वर्ल्ड कप जीता, और वुमेन्स क्रिकेट ने, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट ने पहली बार एक आईसीसी टाइटल जीता था और वो अंडर 19 टीम ने जीता था। तितास साधु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, नई गेंद से वो तेज गेंदबाजी करती है, तो काफी उम्मीदें थी कि तितास साधु शायद प्लेइंग 11 में होगी, और बट वैसे हुआ नहीं। पर देखते हैं वैसे अगर मौका बनता है कि नहीं, क्योंकि अगर आपने परफेक्टली पॉइंट आउट करा, शिखा पांडे तीनों मैचेस खेले, उन्होंने केवल 2 विकेट्स ही चटकाए हैं, तो वो एक रिप्लेसमेंट वहां पे बन सकती है। और रिसेंट रिकॉर्ड भी अगर हम उनका देखें तो एशियन गेम्स में भी वो पार्ट थी इंडियन टीम का, गोल्ड मेडलिस्ट जो रही थी इंडियन टीम। बायलैटरल सीरीज हालांकि एक ही मैच में वो उन्होंने 4 विकेट्स निकाले थे, बाकी T20 में वो विकेट्स नहीं निकाल पाई थी, बट शी इज जस्ट 19 ईयर्स ऑफ एज। अगर उनको ज्यादा मौके मिले तो आई एम श्योर वो विकेट्स चटका पाएगी, क्योंकि वो जो नई गेंद से गेंदबाजी करती है, आई थिंक शी बोल्स एट अ गुड पेस एज वेल, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों कर पाती है। शी हैज अ गुड हेड अबव हर शोल्डर्स, आई फील केवल 19 साल की उम्र है, बट काफी मेच्योरिटी दिखाती है वो गेम के अंदर, तो उनके लिए मौका बन सकता है। और खासकर जब ऐसे प्लेयर्स अगर टीम में हो, शिखा पांडे जैसे या अरुंधति रेड्डी, हालांकि उन्होंने 4 विकेट्स चटकाए हैं पर शिखा ने 2 ही विकेट्स लिए हैं, तो यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट के रूप में दिल्ली कैपिटल सोच सकती है। बट आई थिंक दिल्ली का भी यही मानना होगा, शायद दे आर प्रेफरिंग एक्सपीरियंस ओवर यूथ। अगर वो उनका माइंडसेट रहेगा तो शायद इसीलिए शिखा पांडे को मौका मिल रहा है, और प्रोबेबली अगर दिल्ली कैपिटल्स वंस दे क्वालिफाई और अगर उनका पोजीशन सिक्योर हो गए तो शायद हम कुछ चेंजेस देख सकते हैं प्लेइंग 11 के अंदर। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि तितास साधु, आई थिंक शी हैज प्रूव्ड हर, एंड आई थिंक उनको जगह मिलनी चाहिए, बट देखते कब मिलती है उनको जगह। Pratik, what would you like to tell us about Titas Sadhu being a potential replacement for Shikha Pandey moving forward? So, firstly, it is quite worrying, when one of your frontline bowlers are not among the wickets, because bowlers at the front, who win you power plays, will it will go on and define as to whether you win games or not. And even though she, comes with a lot of experience, we really don't know what is running on the management's mind. Like Julie mentioned, it is very possible for Tita Sadhu to come in the mix up as well, because she has made her international debut for India, and sooner or later, if things continue like this for Shikha Pandey, an opportunity might well rise up for Tita Sadhu. So moving on, let's see our matchups for today. From the Delhi standpoint first, we've spoken about Jemima Rodriguez a lot. We saw her in the first game scoring that 42 at the death overs. Then in the next match, she did not get to do much. She hit that 1-4 when uh, she played just the one ball and hit it for a four. And then in the next match, she was, dismissed quite cheaply. So her matchup for today is against the spinners. So we've seen her struggle eventually because she's been overall average of 29.59 in the women T20 format. But against the spinner, she just averages 19.64. Yet another Indian batter struggling against the spin. Julie, what are your views on how Jemima should counter the spinners today? Because we see Gujarat is a team of spinners. There's Ashley Gardner, who is a potential threat towards Jemima. आई थिंक ये आंकड़े देखकर मुझे भी काफी ताजुब हुआ है, क्योंकि अगर हमने आपने, मैंने, प्रतीक ने अगर रिसेंट इंडिया का सीरीज देखा होगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रहा था, तो आई थिंक इफ जेमिमा को, इफ समबडी वुड हैव वोकन अप फ्रॉम स्लीप, शी वुड हैव स्टिल प्लेड द स्वीप शॉट। तो वो जिस तरीके से स्वीप शॉट्स लगा रही थी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ, तो यूजुअली हम क्रिकेट में देखते हैं कि स्वीप इज द बेस्ट डिफेंस फॉर एनी बैटर अगेंस्ट स्पिनर्स, कैन बी अ गुड फॉर्म ऑफ अटैक एज वेल। तो जिस तरीके से वो स्वीप्स लगा रही है, मुझे नहीं लगता ज्यादा उनको तकलीफ होगी। ये शायद आंकड़े थोड़े से हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, पर इस सीजन जब भी हमने अभी तक जो जेमिमा का बैटिंग देखा है स्पिनर्स के खिलाफ, काफी कंफर्टेबल मुझे तो आई थिंक लगी है वो। और उनके जो विकेट्स भी वो गए हैं, आई थिंक पेसर्स के खिलाफ ही गए हैं, मेरे ख्याल से नैटसिवर ब्रंट ने उनको एक बार आउट कराया और आरसीबी के खिलाफ नडीन डी क्लर्क ने आउट करा था। तो उनके फेवर में एक बात है कि स्पिनर्स ने उनको अभी तक आउट नहीं करा है, एंड गिवन द फैक्ट दैट शी हैज वंडरफुल स्वीप शॉट्स इन हर आर्मरी, वो ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी।
बट ऑफकोर्स कमिंग टू द पॉइंट कि आज गुजरात जायंट्स में 4 स्पिनर्स है, 4 अच्छे स्पिनर्स हैं। गार्डनर है, स्नेह राणा है जो ऑफ स्पिनर है, और अगर मन्नत कश्यप को दोबारा मौका मिले तो मन्नत कश्यप एंड तनुजा कंवर ऑफकोर्स लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। तो 2 ऑफ स्पिनर और 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने अगर जेमिमा को खेलना है तो मेरे ख्याल से यही अप्रोच होगा कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि प्ले विद द स्पिन। जब इनिशियल उनके जो 5-6 डिलीवरीज है वो प्ले विद द स्पिन। फॉर इंस्टेंस अगर ऑफ स्पिनर है तो ऑब्वियसली उनका जो स्वीप है काफी फेमस हुई है वो स्वीप के लिए, तो स्वीप शॉट्स लगा सकती है, वो अच्छे लगाती है। और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ अगर विद द स्पिन खेलना है तो कवर्स के ओर खेले, मिड ऑफ के ओर खेले, तो स्ट्रेट बैट से जितना वो खेलने की कोशिश करेगी ऑफ स्पिनर्स को वो उतना अच्छा हो सकता है। और ऑब्वियसली जैसे जैसे वो सेटल हो जाए अपने पारी में तो वो स्लॉग हिटिंग भी कर सकती है। तो आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ कंसर्न होगा उनको, क्योंकि दोबारा मैं कहूंगी काफी अच्छा स्वीप खेलती है वो। And Pratik, what do you think will be Jemima's best, best comeback to this sort of a matchup? Well, I feel, Jemima is that sort of a player whom I do not associate with, playing spin straight, towards long on, long off. She's always used the slog sweep or even this sweep shot to a very good effect and to her strength as well. We saw in the earlier game where she scored about 40 odd runs how strong she was towards the square of the wicket. So I think the approach should be pretty much the same. She's only up against finger spinners today, which is actually a good thing because wrist spinners, leg spinners do possess greater threat because you don't know which way the ball is going. They've gotten variations, and a lot of things are happening. So she'll be up against people like Tanuja Kanwer who would flight the ball up, or even Ashley Gardner who would keep it full. So she could use the leg side to good effect and play the singles as well. We've spoken many a times, whenever anyone's struggling, the best place to watch the game is from the non-strikers end. So, there's plenty of stuff for her to do around, and I'm hopeful she, sticks on to her positive game. That is, rely on the leg side and maneuver the ball in the right areas. So let's move on to our next matchup very quickly. That is Beth Mooney versus Pace. In most of the Gujarat matches, we've always discussed that Beth Mooney has struggled against the Pacers, and the Pacer has gone on to dismiss her in that game. So Beth Mooney's numbers, as we all know, are very poor against pace as compared to her average that is overall in the women's T20s. So that is something of concern for the Gujarat camp today because she's up against the like of Marizanne Kapp, who is running in beautiful form and is absolute threat with the new ball. So Julie, what do you think? What should be Mooney's game plan today? मुझे लगता है अगर मैं बेथ मूनी हूँ आज के मैच के लिए, मेरा काम बहुत सिंपल है। मैं सिंगल लेके मेरे जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड की जो पार्टनर है लॉला वुल्फार्ट, जो खुद एक साउथ अफ्रीकन है, मैं उनको कहूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक लीजिए। आपकी कंट्री मेट है मारिजान काप, आप उनको हैंडल करिए, मैं बाकी बॉलर्स को हैंडल कर लूंगी। तो आई थिंक बेथ मूनी का अप्रोच यही होगा कि प्रोबेबली सिंगल ले, लॉरा वुल्फार्ट को ज़्यादा स्ट्राइक दे। बट ऑन अ सीरियस नोट आई फील कि मूनी अगर हम देखें ये सीजन के अंदर तो 2 बार पेसर्स को आउट हो चुकी है। शबनम इस्माइल ने एक बार विकेट लिया था उनका और दूसरी बार रेणुका सिंह ठाकुर ने। तो आई थिंक उनके जो आई थिंक दोनों जो साइड्स होते हैं बॉलिंग के, वहां पे कंसर्न लगा है। शबनम इस्माइल उन्होंने ओवर द विकेट उनको आउट करा था, रेणुका सिंह ठाकुर ने राउंड द विकेट आउट करा था, तो दोनों एंगल से काफी परेशानियां हुई है बेथ मूनी को। आई थिंक उन्होंने भी आई थिंक सोचा होगा, उन्होंने अपने वीडियोस देखे होंगे कैसे वो आउट हुई है, एनालाइज भी करा होगा। बट आई थिंक मेरे लिए यही है कि जो पहले के जो इनिशियल जो डिलीवरीज है थोड़ा सा सेट हो जाए, गेट हर आई इन, एक टेक द मेजर ऑफ द पिच, व्हाट द पिच इज डूइंग, क्योंकि हमने इस सीजन अभी तक देखा है पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल रहा है। द बॉल इज जस्ट होल्डिंग ऑन टू द पिच, काफी स्टिकी कंडीशंस भी लगे हैं हमें। और गुजरात जायंट्स अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो शायद मुश्किल हो सकती है बेथमोनी को भी, क्योंकि मारिजान काप जो एक इनफॉर्म बॉलर है वो उनके सामने होगी। बट आई थिंक मेरे लिए वही अप्रोच होगा कि प्रोबेबली सिंगल डबल में खेले, पहले 10-12 रन वैसे आ जाए और उसके बाद चौके छक्के लगाने की कोशिश रहेगी। आई थिंक प्ले टू द मेरिट ऑफ द बॉल, एंड वी नो कि कोई भी बॉलर एक आध ओवर में एक या दो लूज डिलीवरीज जरूर करते हैं, तो वो लूज डिलीवरीज का वेट करे एंड देन शी कैन पनिश दोज लूज बॉल्स। And Pratik, what would you like to tell us?
Well, I would totally agree on what Julie has told. It's just for her to keep it simple, because by now even she would know that Pacers and her do not possess a great relationship. But keep the basics simple. Maybe she could stand a couple of steps ahead to cut the swing and leave the odd ball that is seaming away outside the off stump, and only play the deliveries that is onto the pad, and assess the conditions a little bit before you're fully sure about what shot you want to play. And by taking up these steps, I think the pressure would come down, because even the previous time around she managed only 16 of 16 deliveries, and finally ended up falling to Sophie Eccleston. It was because she wasn't able to attack the Pacers, and she would have wanted to break free against Eccleston, but again, we know the kind of bowler she is, and she ended up falling to her as well. So the pressure shouldn't be built up from ball number one itself. Every 5 to 6 deliveries, even a world class bowler would give you that occasional bad ball which is meant to be put away. So wait for them, and play with a patient mindset, so that you stand for your team up until the end, given that you're already down with 3 losses. Let's quickly move on to our predictions for today. Julie, who do you think is going to emerge victorious today? मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स आज जीत जाएगी। ऑब्वियस रीजंस, गुजरात जायंट्स काफ़ी लो ऑन कॉन्फिडेंस होंगी, बट दे आर नथिंग टू लूज़, तो देखते हैं कि अलग गुजरात जायंट्स का परफॉर्मेंस हमें देखने मिलता है कि नहीं। बट मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स आज का मैच जीत सकती है। एंड इफ दिल्ली कैपिटल्स बैट फर्स्ट, एक हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट की हम उम्मीद रखेंगे, बट गुजरात जायंट्स अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो शायद एक 120-125 का स्कोर हो सकता है। बट लेट अस होप कि एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हमें देखने मिले। And Pratik, who do you think is winning tonight? Well, I would like to back the Gujarat Giants today. The fact that their batting was sorted out the previous time around, even though they couldn't convert it into a victory, but those were great positive signs for them to step onto the field with quite some confidence today. Right from the top, the induction of Laura Woolward also would make a huge difference, and their top order is pretty much stacked, I'd say, up until Ashley Gardner. All of them are world class batters who possess unreal abilities. So they need to rely on these top 5 to 6 batters to get off to a good total, if they're batting first, of course, and take it on from there. So yeah, this might be against the odds, this prediction, but I'm just hopeful for Gujarat that they do come up victorious and light up this WPL. So thank you guys. That is all from our end today. This was our match preview and fantasy picks. If you want a detailed fantasy video, there's a link in the description box. And thank you for tuning in. We'll see you all again tomorrow. Thank you.